faculty at Chandigarh University, Kadua. Today's topic, which I will be talking about, that is understanding learners. In the morning session, you have been told about learning, principles of learning in detail. So I will touch upon why we are talking about understanding of learners. As we all know, we are connected with the technical institutions, whether these are diploma or degree. In diploma, the students enter with 10 plus qualification with some set of knowledge, skills, and attitudes. And in case of degree, that is 4-year program, they come with knowledge, skills, and attitudes. And in the process, we give them very type of experiences during 4 years, and they come become confident because they are getting knowledge, skills, and different experiences during the 4 years tenure. In educational terms, we call learning as change in behavior. Do you agree with this? Here, I mean with behavior is, that is, earlier he was not arrogant, now he is docile. No, it is not like that. There is a change in behavior means there is change in his knowledge and skills and attitudes, resulting there is a reflection of confidence and certain set of knowledge in the particular person. I have prepared a number of slides and show. And before I do that, I want to tell you the background of this topic. In early time, we were protected by the belief that the students who got failed or who have not learned, this is because of the student's problem, because he had not paid the attention. But in today's scenario, that is starting from first half of the 20th century, there was a total change in the scenario what we are seeing today. That is, the homes were crowded, means the house was small and the number of people were much more. There was hunger, there was poverty, there was family problems, illness, national origin, there was fighting for our freedom, then religious backgrounds. All these factors were affecting the learning of the students. And nobody was thinking about the teaching learning process at our colleges or our institutions. In addition, there was socio-economic status of a particular person, his IQ, insufficient environment were the reasons for the failures of the learners. In 1960 and 70, when there was a good expansion of education, rapid growth was taken place, extensive mobility, hostile and aggressive student behavior were the reasons of inadequate learning of students. And during the past decades, the blame of students not learning directly came to us, means our institutions, telling that there is a gap between teaching and learning process. So we being teachers and the instructional methods, both were targeted. And in the 21st century, which we call as a IT age, knowledge explosion, new technologies, automation, ICT, teaching methodology, these are totally changed from the past. And we are attempting to educate more learners with varying levels of intelligence, varied emotional and psychological experiences, and the persons with diversified cultural backgrounds. So our success lies in identifying how the students learn most effectively, what are the tools required. And we know that suppose somebody achieves, say, get good marks, means achievement score reveals academic level. And if we talk about the IQ and we test his IQ, this will tell about the learner's potential to learn. But we do not tell why the students has not learned
or progressed further more quickly. The same exposure, but why he has not learned so quickly? That is the point we have to take care. Ultimately, aim of such program is to improve our teaching learning process. And today's topic will be focusing on understanding learners. So I'll show you some of the slides. Acha, please tell me, there's a one query. Were you given the one questionnaire yesterday? Are you hearing me? Did you get any questionnaire? सर उनका माइक चल रहा है क्या? इसने बोल दो आपकी आवाज नहीं आ रही. Did you get any questionnaire to fill? No voice. सर उन्हें बोल दो आपकी आवाज नहीं आ रही. उन्हें बोल दो आपकी आवाज नहीं आ रही. So it's only 1 minute. नहीं सर उन्हें बोल दो है ऐसी तो आवाज वो अपना माइक सेट कर लेंगे. अच्छा एक्सक्यूज मी अपना माइक सर यू आर नॉट ऑडिबल. स्टिल यू आर नॉट ऑडिबल. Am I audible? Yes sir, yes sir. You are audible now. Achha, there was one questionnaire which was to be circulated to the participants. Has that been done? We got the question. It's on the way, sir. It's coming, sir. Achha, you will be distributing. Yes, sir. Just in 5 minutes. Okay, okay, thank you. So today we will be discussing about the teaching learning process, purpose of education, various terms, need for understanding learners, learning styles, and an exercise. We all know the central purpose of any educational endeavor is to promote learning among the learners. If we see this rectangle, that is a teaching learning process. Connected to it are resources, and there are two arrows. On one side, these are students with some initial behavior, and on the other side, we see that the students with modified behavior. Resources are there for the teaching learning process. There are 4 types of resources: physical, human, financial, and information, and not the least energy, because without energy we cannot move. So physical, you all understand, human, trained teachers and supporting staff, financial, recurring and non-recurring. Purpose of education. The purpose of education is to bring about desirable change in the behavior of learners. It is accomplished by using appropriate teaching strategies, methods, and tactics to achieve instructional objectives. Madam might have told in the morning about the instructional objectives. For every program, there are some set instructional objectives, even for a topic. What is the learning outcome after undergoing this very topic? Teaching. Teaching is a combination of teacher and student activities supported by the best available resources to produce an atmosphere where learning takes place. We all know, or do you know, teaching is a high stake game. Why? It is said the mistake of a doctor is buried in a grave. I think you all agree. The mistake of an engineer is cemented with bricks. जब हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, suppose there is some disalignment, what we do? We put a more cement, more mortar, and make it align. Mistake of a liar lies in the files. Suppose somebody was convicted falsely, but the whole record is in the files. The mistake is in the files only. And the mistake of a teacher is reflected in the nation, because teachers are the mirror of the nation. So that's why we have to be very careful, because it is not only that we are coming to colleges and delivering our lectures and
we have got no belongingness with the students. We are part and parcel of this society. We have to take care about all these aspects also. Teaching is sometimes that takes place only when learning does. This is very important. We say that I am a good teacher. मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पर यदि स्टूडेंट की लर्निंग नहीं हुई तो इसका मतलब कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया. If the students are not learning something tangible, concrete, the teacher is not teaching, no matter what the teacher is doing in his or her class. Sorry. Whatever you teach to a student, whether it is through your words, your actions, or your own example, impression is engraved on the mind of the student. Learning. So in nutshell, what learning is, it is a process of gaining new knowledge or skill. It must include retention of newly acquired capability or behavior so that it can be displayed at some future time. It can also be defined as a relatively permanent change in the behavior of the individual resulting from experience. What is not learning? Madam must have told it is not maturation. Behavior changes brought about the factors like fatigue, drugs, illness, emotional situations are purely transitory in nature. But we are talking about which brings a permanent change in the behavior of the student, that is called learning. What is the need of to understand the learners? Any educational program is nothing without learners. We all know. In the teaching learning process, if there are no learners, it has got no then there is no requirement of teachers. Very little learning will take place if we do not understand our learners and their needs. No two individuals are alike. There must be some difference. There is difference among individuals with respect to age, gender, intelligence, thinking style, personality, self-concept, etc. Heterogeneity among learners is increasing day by day. Individuals interpret events in terms of their experiences, intelligence, personality, cognitive style, creativity, self-concept, age, gender. These are the various factors which make the difference in the individuals. They perceive, interpret, and evaluate the same learning event in different ways because of these above factors: experience, intelligence, personality, cognitive style, creativity, self-concept, age, gender. Therefore, it becomes for the teachers to understand learners and individual differences, for providing relevant and appropriate learning experiences for enhancing learning. Our main focus is to enhance learning by all means. Students have different levels of motivation, different attitudes about teaching learning. The more thoroughly instructors understand differences, the better they can meet the diverse learning needs of the students. There exist various categories of diversity which influence teaching learning. What is the diversity? Three categories: difference in student learning styles, characteristic way of taking in and processing information. हम क्लास में कोई चीज पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक की बात करते हैं. How the students take it? That is the point. Approaches to learning: surface, deep, and strategic. Once we are teaching, there are a set of students who take only the surface meaning. There are other set of students who go deeper into the meaning of particular topic, and there are some strategic style people who will go, okay, why this, how this can be done. There will be many questions about the topic. Intellectual development level: attitudes about nature of knowledge and how it should be acquired and evaluated. Instruction begins when the teacher learns from the learner or student. This we have to keep in mind.
That is when he puts himself in learner's place. टीचर का काम पढ़ाना नहीं है, क्लास में गए अपना जाके पढ़ाए, उसको ये भी देखना है कि स्टूडेंट को समझ में आता है या नहीं आता है। यदि नहीं आता तो वो उसको अपनी पोजीशन पे, स्टूडेंट की पोजीशन पर रख के देखे कि क्या उसको समझ में आता है। That is my point to say. There was one study that reveals declining students' interest towards particular program. हमने ये देखा है, क्योंकि हमें मौका मिलता है बाहर जाने का, तो we see that there is a decline in certain courses. People don't want to come towards engineering. They say it is nothing because they don't find any interest. Dropout rate has gone up. Many good students have leave because of their dissatisfaction with the teachers. वो कहते हैं जी हमें टीचर का स्टाइल समझ में नहीं आता, हमें उसकी पढ़ाई जो पढ़ाता है हमें समझ में नहीं आता। और ऑन द कंट्रेरी फैकल्टी का व्यू क्या है, क्योंकि टीचर का भी तो व्यू है ना, तो वो बोलते हैं स्टूडेंट्स कैन मेमोराइज, पुट वैल्यूज इन द फार्मूला मैकेनिकली विदाउट थिंकिंग। उनको जैसे मैकेनिकल बता दिया कि दिस इज द फार्मूला, अप्लाई इन द इक्वेशन एंड सॉल्व। And there is some set of faculty, they can manage to get many students perform at a remarkably high level. That is, the students display the first rate problem solving, creativity, critical thinking. This is the higher level of knowledge, that is problem solving, creativity and critical thinking. It was also noticed skill deficiencies are due to instructors. I think you will agree, because the instructor who gives the manual training, if he is deficient, certainly the students cannot get the proficiency. In nutshell, teachers will have to think about students' background, students' strength, students' weaknesses, students' interest, students' ambitions, sense of responsibility, level of motivation, approaches to study. In addition, the students' learning depends upon students' native ability. हर एक के पास एक core ability, हर एक इंडिविजुअल के पास prior preparation, वो क्या घर से पढ़ के आता है पहले, compatibility with instructor's teaching style, that is much more important. हम कहते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छा है, क्या वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाता है? नहीं, his style, his way of teaching, that matters. Because of the above, there is need to understand learners. So these were the reasons why we require to learn about learners. So we can safely say the task of a teacher is quite complex. It is not only loading and unloading. घर से हम पढ़ के चले गए, या ना आए? No, it is not like that. Make them understand. Now there is one point comes. This learning in youth and learning in adults. So there is a difference. We see the difference. Adult learner, problem centered. They will always go towards the problem. और यूथ का क्या है जी? सब्जेक्ट सेंटर, ये हमने सब्जेक्ट पढ़ना है। रिजल्ट, एडल्ट्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड, इस पढ़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा। यूथ का क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि इस पे मेरा बेस बनना है फ्यूचर के लिए। एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड, whereas youth are often depends upon adults for direction. वो कहेंगे जैसा आप कहेंगे मैं वैसा पढ़ लूंगा, जैसा टीचर ने कराया मैं कर लूंगा, जैसे पेरेंट्स ने कहा मैं वैसे कर लूंगा। स्केप्टिकल अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन, इनको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दो एडल्ट्स को, वो कहते हैं मुझे क्यों चाहिए, क्यों दे रहे हैं मुझे। बट यदि यूथ को दोगे वो कहेंगे वी आर रेडी, पता नहीं कब काम में आ जाए। सीक नीडेड एजुकेशन, adults will seek only the needed education because of their career or their next job. They are thinking in these terms. And in case of youth, seek education for unclear future because they do not know where they will go. So they are taking each and everything haphazardly. In adults, accept responsibility for learning. They are responsible for their learning. But in case of students, we make them sit,
पर वो कट लगाने से, बग लगाने से बाज नहीं आते. Depends on other, reluctant to accept responsibility. तो adult learner के जो main characteristics हैं, these are because of their years of experience and wealth of knowledge, established values, beliefs and opinions, expected to be treated as adults. किसी adult को आप जाके शाबाश बोल दो, he will feel it. वो कहते हैं treat me like adult, मैं बच्चा नहीं हूँ. और उसको वही चीज चाहिए जो उसके रिक्वायरमेंट है. Adults need to feel self-directed, have problem-centered approach to learning, less interested in survey type of courses. जहां पे ज्यादा इकट्ठा करना है डाटा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते. वो कहते हैं हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे दो, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ वट एवर द फैसिलिटीज अवेलेबल. Adults have increased variation in their learning because of their individual difference with age. आपने adults में देखा होगा, there is one person who is say at 40 and there is one person who is at 30. There is a large difference, and the person suppose he is at 50. You will say there is a problem of retention, forgetfulness that starts after 40, but degree varies. It is not to all, but in number of cases, he is liable to get forgetting. So we have to take care about the adults, about the individual differences due to some age. Teaching strategies adults. तो इनके लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करें? यूज एडल्ट स्टूडेंट्स एज रिसोर्सेज. मान लीजिए कि हमारी कोई ऐसी क्लास है जिसमें एडल्ट्स हैं, तो दे हैव गॉट रिच एक्सपीरियंस, वी मस्ट यूज दैट their experiences, take examples, live examples, use open-ended questions to draw out knowledge and experience. तो उनको open-ended question दीजिए, because of their experience they will be able to solve that. Take time to clarify their queries and permit debate. They will ask so many questions, but the teacher, he will feel interrupted. He has to be to tackle to adults. Treat questions and comments with respect. कभी भी कोई क्वेश्चन आता है उनको एक्सेप्ट करें और रिसीव करें, and acknowledge contribution of the students. Engage students in designing and learning process. जब कभी कोई टीचिंग लर्निंग का कोई कोर्स डिजाइन हो रहा है तो इन्वॉल्व दोज पीपल बिकॉज दे हैव गॉट रिच एक्सपीरियंस. शो इमीडिएटली हाउ न्यू नॉलेज कैन बी यूज्ड. फोकस ऑन थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स विद इन द कंटेक्स्ट. उनको थ्योरीज और कंटेक्स्ट वही पढ़ाएंगे जो उनको डायरेक्टली चाहिए. यूज वैरायटी ऑफ टीचिंग मटेरियल्स एंड मेथड्स टू टेक इनटू अकाउंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस. किसी को कोई चीज डायग्रामेटिकली समझा दो वो जल्दी समझ आता है, और किसी को रिटन मटेरियल दे दो, टेक्स्ट दे दो, वो जल्दी समझ आता है. ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. Again, I summarize individual differences. Intelligence. SES, socio-economic status. The person coming from rural background, urban background, some higher strata of the society, their thinking style, then personality, cognitive style, self-concept. It affects the behavior and achievement of the learners. सेल्फ कंसेप्ट का मतलब आप समझते होंगे, अपने प्रति उसकी क्या धारणा है, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में वो क्या जानता है. दैट इज सेल्फ कंसेप्ट. एज. एजिंग अफेक्ट्स लर्निंग, नॉलेज एंड स्किल एंड रिटेंशन. रिटेंशन मीन्स कि आज उसने पढ़ा समझा पर वो थोड़े दिन में बाद में भूल जाएगा. तो वो रिटेंशन कितनी होती है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. जेंडर. I take this example, though it is not, I can say, final. Girls tend to read better than boys. You might have observed. They are good at communication, but tend to avoid mathematics. In earlier times, we have observed कि यदि उनको मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट की बात करें, साइंस की, वो कहेंगे ये नहीं. यदि उनको बोलेंगे आर्ट सब्जेक्ट, they are ready. Markup, they can write to any extent. But now we have seen, observed
there is a difference in the motivation level. So if we motivate them, they can prove to be much better than even boys. Adults are different from learners, young learners. Adults are more self-guided in their learning. They bring more because they have got a rich experience and expect to bring more. और वो expect करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यहाँ से मिले, and they equip themselves with wider and can take more away. They require learning to make sense. उनको ज्यादा इधर उधर इंफॉर्मेशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है. वो कहते हैं कि हमें वो चीज पढ़ाओ जो हमारे काम की, और ये भी नहीं है कि हमारे टीचर ने कहा इसलिए हमने पढ़नी है. नो, ही विल आस्क क्वेश्चंस कि बताइए क्यों करना है. So there are two basic type of learning, that is reception learning and other is discovery learning. So I put you a question. ऑन करेंगे मैम? सर आप पूछ लीजिए. अच्छा, क्या आप बता सकेंगे anyone कि do you find any difference between reception learning and discovery learning? What is reception learning? Reception learning can be just teacher is having a lecture and student is not receiving it. There is no response from the student side, that is the quest from the student to know more. And what about discovery learning? Discovery can be, as the word itself, self-explanatory, that to make student learn, you have to make it generate a quest, how things come up, how this particular thing came up, how this led to this situation, how some kind of that thing. तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. Reception learning, entire content of what is to be learned is presented to the learner in the final form. स्टूडेंट ने कुछ नहीं करना, उसको जो उसने पढ़ना है सब कुछ उसको बना बनाया दे दो. The learning task does not involve any independent discovery on his part. उसको कुछ नहीं करना, उसको मगअप करना है, याद करना है, बस इतना ही काम. और डिस्कवरी लर्निंग में the whole content of what is to be learned is not given to the learner. whole content नहीं दिया जाता है, hint दिया जाता है सिर्फ. But it is discovered by the learner before he or she can incorporate it meaningfully into his or cognitive structure. उसको hint दे दिया जाता है और उसके बाद में उसको बोला जाता है कि now you bring out with a solution. So that is a basic difference. So steps involved in reception learning strategy. इस strategy में कौन से steps होते हैं? Present information, that is the first. Test for reception means उसको पूछो कि क्या आपको ये पता लग गया या मिल गया. Recall and understand. Then present practice opportunities. उसको मौका भी दो कि यदि वो practice वाली कोई बात है तो वो कर ले. Modify the quantity and difficulty with examples. उसको example भी साथ में दे दो. Present opportunities for application. तो उसको application के लिए भी opportunity दे. तो सब कुछ टीचर ने बना बनाया उसको दे देना. और डिस्कवरी लर्निंग में प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज टू एक्ट एंड ऑब्जर्व. उसमें उसने एक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है. टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये देखिए कि ये क्यों कर रहे हैं, उसको टेस्ट भी करना है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक जा रही है कि नहीं जा रही. आइदर बाय क्वेश्चनिंग और बाय ऑब्जर्विंग फर्दर एक्टिविटी टेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज और द एप्लीकेशन ऑफ न्यू लर्न्ड इंफॉर्मेशन. और उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए so that he may of their own find out new information. So that is a basic difference. Provide supportive and non-threatening, anxiety-free, that is conducive environment for learning. This is the basic of all learning. कोई भी लर्निंग यदि बेटर करवाना चाहते हो, सबसे पहले कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है येलो में. तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज ए मस्ट. Providing opportunities for clarifications of doubts and practice, that is also requirement. Give him opportunity. Let us not snub them. I take the example of Haryana.
देयर वाज वन मैथमेटिक्स टीचर एंड आई वाज ऑन अ विजिट। सो वो बहुत ऊंची आवाज में बोल सकते थे, तो मैंने क्या किया कि मैं उनकी क्लास के बाहर साइड में खड़ा हो गया, सो दैट दे आर नॉट इंटरप्टेड। व्हाट आई ऑब्जर्व, एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया और पूछा कि सर इसका क्या मीनिंग है। ही गॉट स्नब, उसने पता नहीं बड़ा बुरा फील किया, मुंह बना लिया और बच्चे की ओर देखना शुरू कर दिया जैसे ही वाज स्टेयरिंग एट द स्टूडेंट। सारी क्लास चुप कर गई, तो उसको बोलता है खड़े हो जा। तो स्टूडेंट खड़ा हो गया कि पता नहीं इसने क्या गलती कर ली। कहता भी देख, तूने तो फेल होना ही होना है, तू बाकियों को फेल करवाता है, बढ़ जा। इस तरीके की स्नबिंग से लर्निंग तो क्या होनी है, वो स्टूडेंट कभी भी उठ नहीं पाएगा। और मैथमेटिक्स में तो आमतौर पे हमने देखा है काफी लोगों का हाथ तांगी होता है, वो उसका कारण यही है। जो हमारे मैथमेटिक्स टीचर्स हैं, दे शुड मेक द मैथमेटिक्स, जिसको रोचक बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तभी स्टूडेंट्स इसके ऊपर चल पाए। तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स एंड प्रैक्टिस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, यूज ऑफ रिवार्ड्स। मान लीजिए किसी ने ठीक जवाब दिया है तो उसको पैट दीजिए, शाबाशी बोलिए, उसको वेल डन, कुछ ना कुछ बोलेंगे। प्रमोट ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, देन प्रेजेंट ह्यूमन मॉडल, उसमें किसी की कोई एग्जांपल दे सकते हैं, अपनी एग्जांपल दे सकते हैं, इफ दैट इज गुड। सीक्वेंसिंग द कंटेंट मैटर, हमें जो मैटर है उसको बड़ा सीक्वेंस तरीके से पढ़ाना चाहिए। पहले नहीं एब्स्ट्रैक्ट चीज पढ़ा दो, पहले उसको वो चीज पढ़ाइए जो उसको पता है, उसके बाद में उसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाइए। फॉलो लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू फैसिलिटेट लर्निंग, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हायरार्की ऑफ टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स, जैसे मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिकल से हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि आपने ओम्स लॉ पढ़ाना, क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक लॉ, तो हम पहले सीधा ओम्स लॉ पढ़ाएंगे या उससे पहले कुछ और पढ़ाएंगे? उससे पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, वोल्टेज के बारे में बताएंगे, करंट के बारे में बताएंगे, उनका आपस में रिलेशनशिप बताएंगे, टेम्परेचर के बारे में बताएंगे कि हाउ डज इट इफेक्ट द रेजिस्टेंस। देन गिविंग एन इक्वेशन वी टेल देम दैट दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, और एक ग्राफ बना के डिफरेंट रीडिंग लेके हम उनको दिखाते हैं कि हाउ दीज आर रिलेटेड। सो इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स। डायरेक्टली हम थ्योरम्स पढ़ाने लग जाते हैं, उससे पहले कई जो सब कंसेप्ट्स हैं वो जरूरी हैं पढ़ाना। इजी टू डिफिकल्ट, पहले सिंपल चीज पढ़ाओ, पिछली क्लास के एग्जांपल ले लो, उसके आगे फिर फर्दर चलना शुरू करो। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन। हमने जाके ये नहीं दिखाना कि मुझको आता आपको नहीं आता, हमने ये दिखाना है कि आपने ये सुना होगा या उसके बारे में थोड़ा सा बता के आगे बताइए। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स जो चीज दिखती है वो पहले बताइए, फिर उसके बाद में उसकी जनरलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, पहले ऑब्जर्व करवा दीजिए, फिर पूछिए कि ये क्यों हो रहा है, देन रीजनिंग, दैट इज द सीक्वेंस। So hierarchy of topics, easy to difficult, simple to complex, known to unknown, concrete to abstract, and observation to reasoning. In mathematics, we all know, जब हम सबसे छोटी क्लास में थे, और आजकल तो आप अपने बच्चों को जो प्री नर्सरी में जाएंगे तो ये वाली चीज करवाएंगे कि आप पहले दिन उसको डिवीजन पढ़ा देते हो, या पहले दिन उसको आप मल्टीप्लिकेशन सिखा देते हो, या पहले दिन उसको सबसेक्शन सिखाते हो, या उसको एडिशन सिखाते हो। सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। दिस इज सीक्वेंस, इजी टू डिफिकल्ट। नाउ वी कम टू लर्निंग स्टाइल्स। Learning styles are the characteristics, cognitive, affective, and psychological behaviors that serve as relatively stable indicators of how learners perceive, interact with the, and respond to learning environment. ये एक precise definition है। From this we learn कि ये इसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व है, cognitive, affective, and psychological behaviors। इनका मिक्सचर ही हमें relatively बताएगा, इंडिकेट करेगा कि हम किसी चीज को कैसे लेते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं।
Some students are comfortable with theories and abstractions. कई बच्चों को theories या पका पकाया जवाब मिल जाए वो खुश हैं, बस ठीक है हो गया. And there are others, वो कहते हैं कि कैसे हुआ, facts, observation, phenomena, ये सारी चीजें वो चाहते हैं. And there are another set of students, they prefer active learning. They want to get themselves involved, lean towards introspection. वो उसके बारे में सोचते हैं, ये क्यों, कैसे, क्यों हुआ, उनके कई क्वेरीज आती हैं. Prefer visual presentation. There are some, वो कहते हैं जी हमें कोई बड़ी चीज दिखा, तब वो समझ पाते हैं, उनको लेबोरेटरी में ले जाओ. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ड्राइंग. ड्राइंग में हम उनको सिखाते हैं सेक्शंस. सेक्शन में क्या होता है, प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू. मान लीजिए एक पिरामिड है, पिरामिड को हमने स्लैश कर दिया और हम वर्बल रिटर्न में तो दे दिया कि पिरामिड इज कट फ्रॉम एट दिस हाइट एट दिस एंगल and what is the, and you make the plan of the section and side view. कहने को तो बहुत आसान है, but how the students will perceive, how he will understand what I am telling or what I am asking. So better it would be, bring the model to the classroom, show him that this is called pyramid, how many sides pointing towards top, and if we make a cut, और जो मॉडल में उसको पीस को अलग कर दो. Now you tell him that you see from the top, that is called plan, see from the side, that is our side view. So this is how we teach them. Prefer visual presentation, and similarly for any experiment or any model, show them in the laboratory or take some model in the classroom while we are teaching theory classes. And I will also suggest you that give emphasis on practical. You will find if we give emphasis on practicals, theory will become the byproduct. That I have experimented and found that this can be done. Prefer verbal explanation. There are some, उनको कुछ दिखा भी दो, थ्योरी भी बता दो सब, पर उनको जब तक उनको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा उनको समझ में नहीं आता. Prefer verbal explanation. That is their requirement. There are different styles of learning. So approaches to learning and orientation of studying: reproducing orientation, meaning orientation, and there is achieving orientation. Adopt strategic approach. मतलब ये different type of ये study का है. Intellectual development at the highest level, students display thinking pattern like scientists and experts. तो कभी आपने देखा होगा कि कोई छोटी उम्र का स्टूडेंट, मान लीजिए कि वो फर्स्ट ईयर का है, और ही विल बिहेव इन सच ए वे दैट यू विल कॉल हिम, यार तू तो साइंटिस्ट लगता. उसकी हर एक बात में क्वेरी अजीब तरीके की होगी, उसका क्वेश्चन अलग होगा, उसका लिखने का ढंग अलग होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी. तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल की हो सकती है. एट द हाईएस्ट लेवल द स्टूडेंट्स डिस्प्ले थिंकिंग पैटर्न लाइक साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स. दो दीज आर वेरी फ्यू, but they can be made to some extent. So in short, learning styles are the approaches or ways of learning. They process information by seeing and hearing. देखते हैं और सुनते हैं. Reflecting and acting. Reasoning logically and intuitively. Analyzing and visualizing. तो ये सारे जो factors हैं, these vary from person to person, and accordingly their learning style is different. Teaching methods will also vary. अब पूछा आपने कि ये लर्निंग स्टाइल्स के बारे में क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि seeing the style of the learner, we will change our strategy of teaching. That is the main. Teaching methods will also vary with lecture. अब किसी जगह क्या है, लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं, इनको डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, ये बढ़िया रहेगा. इनको प्रैक्टिकल करा दो, ये उससे भी बेटर रहेगा. इनको कहीं फील्ड विजिट करवा दो, इस टॉपिक के लिए ये बढ़िया रहेगा. सेल्फ डिस्कवरी, और किसी को कोई प्रॉब्लम दे दो कि यू कम प्रिपेयर्ड एंड यू विल सप्लीमेंट. Some will focus on principles, other will on applications, and some on memory, while other on application. So this is the difference what we observe during our
teaching learning process. So main learning styles: auditory, ear, means they process information best when spoken. For example, lecture, oral reading, audio recordings. जब वो सुनते हैं, they are comfortable. Auditory learners. Then visual learners. See, they learn best when information is presented in visual formats. That is books, web pages, graphics, images, demonstrations, video diagram. Tactile और kinesthetic learners. ये क्या चीज होती है? Anybody? बताइए. What is kinesthetic? Mic on. So the practical problems that we implement in the real life, like sciences models, that is the tactile or kinesthetic learners. कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं. Sir, in touch mode. हाँ, मतलब कि there is a touch. Suppose we do it. We are using some movement muscles. Learn best. Information is connected. यहाँ पे वो that is process information best when it can be touched or manipulated. For example, laboratories, workshops, where he gets chance to touch and manipulate, taking notes while or write assignments, examine the objects. Environmental learners, who are they? Process information best when it is presented in surroundings that match learner's preference. Room temperature, lighting, seating, all these also affect. Learners can control their own learning environment to a larger extent than on campus or classroom. क्योंकि उनको अलग ही एनवायरनमेंट चाहिए. उनको चाहिए कि मैं अपने बेड के ऊपर बैठ के तकिया पीछे लगा के ऐसे पढ़ूंगा. What affects the learner? Immediate environment, own emotionality, sociological needs, and physical needs. These are the four which affects the learner. We see what we mean by immediate environment. Sound. साउंड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि घर इस जगह पे है कि बाहर व्हीकल जा रहे हैं, या एरोड्राम नजदीक है, या रेलवे स्टेशन नजदीक है, या रेलवे लाइन नजदीक है. साउंड आ रही है, इतनी नॉइज है, वो डिस्टर्ब होता है, वो पढ़ नहीं पाता. वो चाहता है मुझे क्वाइट प्लेस चाहिए, टोटल आइसोलेशन, नो डिस्टर्बेंस ऑफ एनी काइंड. अब ये देखिए, और कई लोग ऐसे भी हैं, चाहे कुछ घंटियां बज रही हैं, चाहे मंदिर है, चाहे कुछ भी है, दे आर वर्किंग एंड कंसंट्रेटेड. दिस इज द इंडिविजुअल डिफरेंस. Like there are certain learners, वो कहेंगे टेबल लैंप लगा हो, लाइट मेरी किताब और कॉपी के ऊपर फोकस हो, बस मुझे उतनी चाहिए, बाकी एनवायरनमेंट में लाइट नहीं चाहिए. सबड्यूड लाइट. और कई लोग ऐसे हैं, कहते हैं जितनी मर्जी बल्ब जगा दो, चाहे 1000 का बल्ब लगा दो, सफिशिएंट लाइट कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज अगेन ए डिफरेंस. टेम्परेचर. अब ये देखिए कि गर्मियों के दिन आने वाले हैं, कमरे में खूब गर्मी है, खिड़की खोलते हैं तो कबूतर अंदर आते हैं, धूप अंदर आती है, गर्मी अंदर आती है, तो वी आर अनकंफर्टेबल एंड वी आर अनएबल टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडीज. सो डिफिकल्टी, तो सर्दियों में हमें वार्म चाहिए, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मीन्स आवर टोटल लर्निंग जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू डिस्कम्फर्ट टेम्परेचर के कारण. डिजाइन. अब कई लोग कहते हैं जी मैं टेबल पे ही पढ़ सकता हूं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूं, मैं सुबह ही पढ़ सकता हूं, 5 बजे उठूंगा, सारे सम्स मैं कर लूंगा. यदि उनको बोल दो रात को करने के लिए, कहते हैं नहीं करना है, मुझे नींद आ रही, वो नहीं पढ़ता. एंड देयर आर अदर्स, वो उनका दिन शुरू ही रात को होता है 10 बजे के बाद, और 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, बाद में सो जाते हैं. So इसमें क्या लिखा है? Places other than the table, that is some learners require an informal design. वो कहेंगे कि हमें आराम वाली चेयर चाहिए, या बेड के ऊपर बैठेंगे इजी चेयर पे, और या कई लोग कहेंगे हम तो नीचे गद्दा बिछा के ही बैठ के पढ़ेंगे. While for others, highly formal physical surroundings arouse motivation and creativity. उनका पढ़ना ही उन्होंने तब है जब उनको ये environment मिले.
So this is again a difference of the environment. Own emotionality. अपनी इमोशंस बहुत इफेक्ट करती हैं हमारे काम पे. इसमें सबसे पहला पॉइंट है मोटिवेशन. हाउ मच मोटिवेटेड वी आर. What is motivation? It is a hidden force which makes us to work. Teachers need to employ different strategies to motivate their students. Persistence, continuity and completing the task in a stipulated time for. ये बहुत जरूरी है. कहते हैं मैंने काम शुरू तो किया था पर हाफ हार्टेडली छोड़ दिया. नो परसिस्टेंस. Responsibility. Need for structure and flexibility. Structure is established for specific rules. कहते हैं भी इस रूल के मुताबिक हमने काम करना है. और वर्किंग ऑन एंड कंप्लीटिंग द असाइनमेंट. मान लीजिए असाइनमेंट मिली, देनी है परसों, डे आफ्टर टुमारो, पर यदि वो नहीं करता है तो इसका मतलब कि हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. इट एम्प्लाइज दैट सर्टन थिंग्स शुड बी कंप्लीटेड इन ए स्पेसिफिक वे. इस तरीके से ही करना है. ड्राइंग शीट बनानी है, उसमें कैसे मार्जिन लगाने हैं, कैसे उसका लीजेंट लिखना है, सारी चीज स्पेसिफाइड है. ये नहीं कि जो मर्जी कर दे. एक्सपेरिमेंट लिखना है तो उसका कैसे डायग्राम बनानी है, एग्जेक्टिव समरी देनी है, एप्रेटिस देना है, प्रिकॉशंस देनी है, सारी चीज सिस्टमेटिक विद इन डेफिनेट टाइम फ्रेम. ये भी जरूरी है. मोर ओवर इट लिमिट्स दी सोशल नीड्स. वर्किंग अलोन. अब कई लोग क्या आदत है कि वो अकेले बैठ के बढ़िया पढ़ सकते हैं. सर एक सेकेंड, वो सेंटर डिस्कनेक्ट हो गया. पढ़ गए. शुरू करो. सोशोलॉजिकल नीड्स. सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया. गलती से होगा. अब सर नेट प्रॉब्लम आई होगी उनको. शुड आई वेट.
हाँ सर, लिंक टूट गया था, अभी हमारा ज्वाइन हो गया ज्वाइन हो गया। Sociological needs. Sociological pattern include working alone. There are some set of students, learners, who will prefer to work alone, and there are another they want to work in group or groups. Working with classmates. There are some वो कहते हैं मैं उसके साथ बैठ के पढ़ लूंगा, अपनी सहेली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अकेला नहीं पढ़ सकता. With one or two friends, or as a part of team, or with adults. वो कहता है कि मेरे पास मेरे घर का कोई एल्डरली पर्सन बैठा हो, चाहे मदर बैठी हो, चाहे फादर बैठा हो, चाहे ग्रैंडफादर बैठा हो, कोई ना कोई बैठा होना चाहिए. Only then I can concentrate. There is a requirement of correct grouping depending upon the individual requirement. So if we want to make him learn, so we have to make a proper group or the complete his requirement. Physical needs, perceptual strengths. Learners learns best through different senses. जो हमारी 5 senses हैं, उनसे ज्यादा वो लर्न करता है. Intake. अब intake में क्या बात आती है? Takes breaks, drink, smoke, chew gums. आप सब आजकल IPL देख रहे होंगे. जो क्रिकेटर में जो हमारे प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं? मुंह में डाली हुई है च्युइंगम और चबड़ 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 वो खा रहे हैं, चबाई जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बनती है. और देयर आर सम, उनको 10 मिनट बिठाना बड़ा मुश्किल है. वो इधर से उधर चलेंगे, क्लास में भी ऐसे बैठेंगे, घर में भी कोई पानी पीने चल पड़ेंगे, कभी कुछ और खाने के लिए उनको ईटेबल चाहिए. और तो और आपने कभी देखा होगा कि वंस द पर्सन इज कंसंट्रेटिंग, ही और शी व्हाट शी इज डूइंग, वो अपने नेल्स को बाइट कर रही है. एक्चुअली ही और शी इज कंसंट्रेटिंग ऑन ए टॉपिक और व्हाट ही शी इज थिंकिंग. पेंसिल और अदर ऑब्जेक्ट्स. कई लोगों की आपने पेंसिल देखी होगी पीछे से दांतन की होती है, उसको चबा जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता. ऐसे ही पेन, उनके हाथ में कोई चीज आ जाए चबानी. टाइम. सम लर्नर्स कैन परफॉर्म वेल एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे. जैसे मैंने पहले बताया था कि या सुबह या रात को या लेट नाइट, it डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे. मोबिलिटी. सम लर्नर्स नीड ग्रेट डील ऑफ मोबिलिटी. दे रिक्वायर वेरिएशन इन पोस्चर लोकेशन. कभी लेट जाएंगे, कभी टेढ़े हो जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, पर वो टिक के एक पोस्चर में नहीं बैठ सकते. तो एक मार्क्स ब्रिक टाइप इंडिकेटर्स MBTI के नाम से मशहूर है. उन्होंने 8 पॉइंट दिए थे. एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, सेंसर्स, इंट्यूटर्स, थिंकर्स, फीलर्स, जजेस, परसीवर्स. ये 8 तरीके का उन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया था फॉर द डिफरेंट सेट ऑफ पीपल. तो आज का हमारा जो फोकस है वो हमारे क्वेश्चनर के अनुसार मैं उसकी ओर आ रहा हूँ. स्टूडेंट्स प्रेफरेंशियली टेक इन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज, सीइंग एंड हियरिंग. ये हमें मन में रखना है. कुछ देख के, कुछ सुन के. रिफ्लेक्टिंग एंड एक्टिंग, रीजनिंग लॉजिकली एंड इंट्यूटिवली, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग, स्टडीली एंड फिट्स एंड स्टार्ट्स. ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे. क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग स्टाइल्स. एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लर्नर्स, जो आपका क्वेश्चनर है वो इसके ऊपर बेस्ड है. सेंसिंग एंड इंट्यूटिव लर्नर्स, विजुअल एंड वर्बल लर्नर्स, sequential and global learners. These are the 4 set of learning styles on which we will be deliberating. अच्छा, तो एक मिनट बताइए इनको. अच्छा, एक चीज बताइए कि जो आपको क्वेश्चनर मिला है उसके साथ में कोई इट्स स्कोरिंग शीट भी मिली है? We have that, sir. IALS scoring sheet, sir. This one. शीट है आपके पास? चलो ठीक है. तो अब आप जब इस सेशन के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगा के या खाना खा के आके इमीडिएटली जल्दी से इसको भर लेंगे. ए बी को आपने टिक करना है. तो मैं प्रोसीजर भी बता दूंगा आपको, डोंट वरी. तो अभी हम इसकी ओर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको. एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लर्नर्स, सेंसिंग एंड इंट्यूटिव लर्नर्स, विजुअल एंड वर्बल लर्नर्स, सीक्वेंशियल एंड ग्लोबल लर्नर्स. दीज आर द 4 कैटेगरीज. तो
ये किसने दी? रिचर्ड एम बेल्डर एंड बारबरा सोलोमन। तो हम इन दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं, एक्टिव लर्नर एंड रिफ्लेक्टिव लर्नर। तो एक्टिव लर्नर कौन सा है? अंडरस्टैंड एंड रिटेन बेटर व्हेन दे डू मतलब कुछ करते हैं, परफॉर्म, अप्लाई और डिस्कस। एंड व्हाट अबाउट रिफ्लेक्टिव लर्नर्स? दे थिंक क्वाइटली, फ्यूचर ओरिएंटेड, प्रेफर वर्किंग अलोन। इनका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम दी जाए वो कहते हैं कि अच्छा पहले सोचते हैं। और इन केस ऑफ एक्टिव लर्नर वो कहते हैं लेट अस ट्राई, दे इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग। जब भी हमें कोई टास्क दिया जाता है तो एक तो तरीका होता है कि भाई टास्क लेके बैठ जाओ और सोचना शुरू कर दो, द अदर वे इज स्टार्ट डूइंग। और ये लोग जो एक्टिव लर्नर है अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको रुकावटें आती हैं। तो इनको क्या होता है कि क्योंकि इनको आदत है अप्लाई करने की, मान लीजिए टीचर सिर्फ जुबानी बताता है, करवाता कुछ नहीं, तो ये कैसे करें फिर? दे शुड स्टडी इन ग्रुप्स। ये ग्रुप्स में पढ़ेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, इनकी जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? तो नतीजा क्या होगा? दे विल गेट ए क्लू फ्रॉम अदर क्लासमेट, और अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर सकते हैं। वर्क विद अदर्स, डिस्कस एंड प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्नर्स, हाउ दे कैन हेल्प देमसेल्व्स नॉट टू मेमोराइज। इनको रटा तो लगता नहीं, रिकॉर्डिंग इनकी प्रॉब्लम है, बस सुनेंगे एकदम से जंप करेंगे सोल्यूशन की ओर। राइट शॉर्ट नोट्स, और इनको क्या करना चाहिए? ये अपना एक शॉर्ट नोट बनाए, समरी बनाए। एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा इनका, पर उसका फायदा क्या होगा कि दे विल बी मच बेटर देन द अदर स्टाइल ऑफ लर्नर्स। अब सेकंड है सेंसिंग एंड इंट्यूटिव लर्निंग। व्हाट इज सेंसिंग? द पर्सन्स हु मेक सेंस बिफोर दे डू, दे विल से ये क्यों, कैसा, फैक्ट उसके देखेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम लॉजिकली, एक तरीके से। पेशेंट विद डिटेल्स, उनको डिटेल चाहिए, डिटेल जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा वो सेटिस्फाइड है। गुड एट मेमोराइजिंग, याद भी कर सकते हैं अच्छा। फैक्ट्स, मोर प्रैक्टिकल एंड केयरफुल, केयरफुल भी है, प्रैक्टिकल भी है। ऑन द कंट्रेरी इंट्यूटिव लोग कैसे हैं? ऑफन प्रेफर डिस्कवरिंग पॉसिबिलिटीज। कोई चीज बता दो, ये ऐसे भी हो सकता है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, जो काम कर रहे हैं उससे हट के। लाइक इनोवेशंस, कोई नए तरीके से काम करने की आदत, जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। एंड डिसलाइक रेपुटेशन, यदि कोई टीचर दोबारा समझाना शुरू कर दे, वो तो सभी लोगों को देख के बोलता है, पर वो परेशान हो जाते हैं, यार दोबारा क्यों बोली जाए, तो तुम्हें तो समझ आ गया, बच्चों का तो ख्याल करो। डोंट लाइक द कोर्सेज दैट हैव नो अपरेंट कनेक्शंस टू रियल वर्ल्ड। तो इनको क्या प्रॉब्लम आती है जो सेंसिंग वाले हैं? डोंट लाइक कोर्सेज जो कहते हैं कि रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं मिलता है, तो परेशान हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। तो ये जो दूसरे लोग हैं इंट्यूटिव, इनको ऐसी चीजें बताओ जिसका कोई सिर पैर भी नहीं है, वो जल्दी से अपने में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बेटर एट ग्रास्पिंग न्यू कंसेप्ट्स एंड मोर कंफर्टेबली विद एब्स्ट्रैक्शंस। हाउ दे कैन हेल्प, और ये सेंसिंग वाले अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं? कांट अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट, तो उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, अपने टीचर से पूछेंगे, अपने क्लासमेट से पूछेंगे, लिटरेचर को रेफर करेंगे, नेट पे जाएंगे, और टाइम टू टाइम इनको एक्स्ट्रा लेबर करके समझ में आएंगे। और दूसरी कैटेगरी है इंट्यूटिव लर्नर्स, दे कांट मेमोराइज, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। इनको याद तो होता नहीं, ना इन्होंने याद करना। दे कांट मेमोराइज, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशंस, डोंट जंप टू आंसर्स। इनकी आदत है जंप आंसर के ऊपर, फटाफट एकदम से क्लास में खड़े होकर हाथ का उठा देंगे कि देखो जी इसका ये आंसर है, उसका कैसे आया वो नहीं पता। तो ये एक डिफरेंस है इन लर्नर, ये जो माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन द क्लासेस। विजुअल एंड वर्बल लर्नर्स, एज द नेम इंप्लाइज, रिमेंबर बेस्ट व्हेन दे सी पिक्चर्स। इनको कुछ चीज दिखा दो, डायग्राम्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, demonstrations. In most of the classes little visual information is presented. ये मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है कि हम ये क्लास में नहीं दिखा पाते, जो कि हमें कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए।
और वर्बल में क्या है, वर्बल लर्नर्स गेट मोर आउट ऑफ वर्ड्स, उनको क्या है कि एक्सप्लेन करोगे जब तब समझ में आता है, चाहे डायग्राम दिखा दो उनको इंटरप्रिटेशन नहीं करनी आती. In most classes, only verbal information is by way of lecture, written material, chalk and board, textbooks and handouts is provided. ये हम ऑब्जर्व करते हैं और एक्चुअली करते भी. फिर लेक्चर दे दिया, कोई रिटन मटेरियल दे दिया, उसके बाद में चार्ट बोर्ड पे कुछ लिख दिया, टेक्स्ट बुक का बारे में बता दिया, हैंड आउट दे दिया, तो ये वर्बल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. तो इन लोगों को कैसे हेल्प मिले, तो इनको क्या है कि ये समरी बनाए और वर्किंग इन ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप्स में क्या होता है जो छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती हैं. दैट्स व्हाई टाइम एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दे कैन वर्क इन ग्रुप्स. और दूसरे केस में क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट डायग्राम्स, स्केचेस, क्योंकि यदि इनको समझ में नहीं आता, मान लीजिए टीचर ने वर्बल इंफॉर्मेशन दे दी क्लास में, वो दूसरे तरीके का नहीं है, तो फिर दे शुड फाइंड आउट डायग्राम, स्केचेस, स्कीमेटिक्स, फोटोग्राफ, फ्लो चार्ट्स और एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आस्क टीचर एंड कंसल्ट रेफरेंस बुक्स, तब जाके इनको समझ में आती है. सो दीज आर द डिफरेंसेस वी आर ऑब्जर्विंग. Sequential and global learners. This is the fourth category. Understand better in linear steps. Sequence में मतलब कि इनको बीच वाले स्टेप से सीधा शुरू नहीं कर सकते. जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम एक फार्मूला बीच में शुरू कर दे तो वो समझ में नहीं पाएंगे, उनको शुरू से वहां पर लिंक करना पड़ेगा. लॉजिकल कनेक्शंस इन ईच स्टेप. पहला स्टेप क्या था, अगला स्टेप क्या है, इसमें लॉजिकल कनेक्शन चाहिए. और ग्लोबल लर्नर्स tend to learn in large jumps. इनको थोड़ा सा बताओ, अपने आप मन में सोच लेंगे ये ऐसे होगा. Absorb material randomly without seeing connections. इनको कोई कनेक्शन की ओर ध्यान ही नहीं देते, जंप करके सॉल्यूशन की ओर आते हैं. Follow logical steps for solution. Sequential में लॉजिकल स्टेप में चलते हैं. और दूसरे may solve problem quickly or put the things in a novel way, but will have difficulty in explaining. यदि पूछेंगे कैसे आ गया तुम्हारा जवाब, ये कहते ये मत पूछो, जवाब है ना ठीक. इनका दिमाग इस तरीके से चलता है. और सीक्वेंशियल में if the teacher teaches globally then they need to work logically and fill gaps. तो इनको अपने टीचर्स, यदि टीचर ग्लोबली पढ़ाता है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाता है, तो इनको दोबारा हेल्प लेनी पड़ेगी कि लॉजिकल कनेक्शन कैसे हैं टू फिल द गैप्स. बट ऑन द कंट्रेरी ग्लोबल में क्या है, दे नीड बिग पिक्चर. इनको सारी चीज के बारे में पहले एक ओवरव्यू दे दो. किताब भी पढ़नी है तो किताब का एक चैप्टर या पढ़ने की बजाय दे शुड फर्स्ट स्किम, सारे चैप्टर्स में थोड़ा 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 करके ओवरव्यू ले लें कि व्हाट अबाउट दिस सब्जेक्ट इज. बिफोर एक्चुअल स्टडी दे नीड टू डू स्किमिंग एंड रिलेट द थिंग्स एंड हैव एन आइडिया. और इनका दिमाग इस तरीके से बढ़िया चलेगा यदि ये पहले बिग पिक्चर देख लेंगे सारे सब्जेक्ट. तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स देता हूं ग्लोबल लर्नर्स के लिए. बिफोर यू बिगिन टू स्टडी फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर इन द टेक्स्ट, skim through the entire chapter to get an overview. Doing so may be time consuming initially, but it will save you from going over and इंडिविजुअल पार्ट्स लेकर. मतलब उनको पहले ओवरव्यू ले लेना चाहिए, उनको आसान हो जाएगा. ये ग्लोबल के लिए बात कर रहा हूं. दूसरा क्या है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ए शॉर्ट टाइम ऑन एवरी सब्जेक्ट, इनको मान लीजिए किसी दिन पढ़ने बैठ गए, आज मूड बन गया पढ़ने का, तो बजाय कि आधा आधा घंटा 4 सब्जेक्ट को पढ़ने के या एक एक घंटा 4 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इनको एक ही सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करना चाहिए. ऑन एवरी सब्जेक्ट एवरी नाइट you might find it more productive or immerse yourself in individual subjects for large blocks. Try to relate the subject to things you already know, either by asking a instructor to help you and see connections or by consulting a reference. ये पहले से रिलेशन उसका एस्टेब्लिश करना शुरू कर दें तभी इजी होगा. Above all, don't lose faith in yourself, क्योंकि जब चीज नहीं आती या जंप करते हैं तो अपने आप पे फेथ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. You will eventually understand new material, and once you do, your understanding of how it connects to the other topics and discipline may enable you to apply it in ways. जो sequential वाला है वो पहले लॉजिकल चलता है और ये जंप लगाता है, और यदि ये ओवरव्यू ले दे
तो ये उनसे भी कहीं बेटर चलेगा। ग्लोबल वर्क, sequential learners. Ask instructors to fill the skipped steps or fill them in yourself by consulting references. When you are studying, take time to outline lecture material and yourself in logical order. It will save your time. Try to strengthen your global thinking skills by relating each new topic of your study to things you already know. ये दोनों के लिए common. The more you can do so, the deeper you have the understanding of the topic. तीसरा है verbal learners. Write summaries and outline. जो verbal learner type learners हैं, उनके लिए summary बनाएं, जैसे कहते हैं वो notes बनाता है, वो उनके लिए ठीक है. Outlines of the course material in your own words. Working in groups can be particularly effective in understanding of material and hearing classmate explanations. You learn even more when you do explaining. जब हम पढ़ाते हैं या किसी को एक्सप्लेन करते हैं, we learn more. Visual learners. Try to find out diagrams, sketches, schematics, photographs, flow charts, any other visual representation of the course material that predominantly verbal. Color code. अपनी कापियों में कलर कोड बना लो with a highlighter so that everything related to one topic is in the same color. ये अपने अलग अलग स्टाइल्स हैं. Ask your instructor, consult the reference books and see if any videotape CD-ROM is available for your course material. Prepare a concept map. Concept map क्या होता है? Anybody? What is concept map? What is concept map? Yes. How the particular concept evolved as with different stages. And we call it as concept map. थोड़ा माइक के पास आकर How the concept evolved through different particular stages. Okay. देखिए कोई प्रिंसिपल बनता है. प्रिंसिपल में देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स और फैक्ट्स. तो वो कंसेप्ट को किस रिलेशन में लगाते हैं, तो तब जाके कंसेप्ट मैप एक मन में एक पिक्चर बन जाती है कि हाउ दीज आर रिलेटेड. दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट मैप. तो एक हमारे मन में पिक्चर बैठ जाती है. बाय लिस्टिंग की पॉइंट्स एंड क्लोजिंग देम इन बॉक्सेस और सर्कल्स, जिसको हम हाईलाइट करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, एरो लगाते हैं, डिफरेंट टाइप्स, एंड ड्राइंग लाइंस with arrows between concepts and show connections. Intuitive learners. Ask your instructor for interpretation or theories that link the facts. टीचर ने पढ़ा दिया पर हमारा क्वेश्चन है ये क्यों कैसे, वो टीचर बताता नहीं है जब तक कि उससे पूछा ना जाए. तो ये लर्नर का काम है कि स्टूडेंट टीचर से पूछे to find out the connections yourself. You may be prone to careless mistakes. तो इंट्यूटिव का क्योंकि काम है मोटे तौर पे काम करना, ज्यादा बारीकी में सोची जाना, तो उसमें क्या है कि जो केयरलेस मिस्टेक्स हैं वो क्वाइट पॉसिबल. बिकॉज यू आर इम्पेशेंट विद डिटेल्स, क्योंकि डिटेल नहीं चाहिए इनको फटाफट रेपिटेशन और जवाब चाहिए. टेक टाइम टू रीड एंटायर क्वेश्चन बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग. क्वेश्चन पढ़ा, आधा क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट आंसर दे दिया, बाद में जाके देखो तो गलत हो गया. पूछा क्या था, जवाब कुछ दिए. बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग एंड बी श्योर टू चेक योर रिजल्ट. तो उसका रिजल्ट भी हमने देखना. तो सेंसिंग लर्नर्स. इन द क्लास वेयर मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज एब्स्ट्रैक्ट. मेरी टीचर पढ़ाता है इस तरीके से है कि उनको बच्चों को सेंस नहीं समझ में आती, तो दे में हैव डिफिकल्टी. तो फिर उसके लिए क्या है कि टीचर का को बार बार पूछना और आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन. If the teacher doesn't provide enough specifications, try to find out in your text or other references or brainstorm with your friends and classmates. To sum up, अब हम सोचते हैं कि भाई मैं कौन सा लर्नर हूं, इंट्यूटिव हूं, वर्बल हूं, विजुअल हूं, सेंसिंग हूं, कौन सा हूं? तो आंसर क्या है? Everybody is active learner sometimes and reflective learner sometimes. Everybody is sensing sometimes and intuitive sometimes. Everybody learns more
when information is presented both visually and verbally. I think you will agree with all these. That's why we are emphasizing AV8s and displays. The teachers will have to use appropriate variations depending upon the learners in their teaching styles to make their teaching effective. Our aim is to make our teaching effective. That is the aim. Before I say end to this topic, I want to sum up. I want to say educational program is nothing without learners. ये हमें याद कि लर्नर के बिना हमारा एजुकेशन प्रोग्राम का कोई मीनिंग नहीं. Learners are the heartbeat of whole educational program. If no learning or learning is deficient or defective, then our educational system is said to be diseased. मतलब वो बीमार है. Students learn in variety of ways: seeing, by hearing, working alone, working in groups, visualizing, modeling. Some prefer text, other concrete before abstract. Accordingly, our teaching methodology should vary. So we will adopt different techniques of teaching to take care about the individual difference of the students. So it becomes utmost important for the teacher to know and understand our learners first and their learning styles. Our success lies in identifying how the student learn most effectively. That is our aim. How effectively our students learn. That is our aim. So we talked about this teaching learning process, purpose of education, various terms, need for understanding, understanding learners and learning styles. और इसके साथ में एक एक्सरसाइज है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तो सभी ने भर लिया है कि नहीं अभी परफॉर्मा? सभी ने क्वेश्चन है भर लिया अभी क्या भरना है? नहीं, we are doing that. We do right now. You are मतलब फिलिंग. तो आपका लंच टाइम हो गया? This is our lunch time. We have around 20 minutes. तो आप जाके लंच कर लीजिए और बाद में आके ये परफॉर्मा फिल कर लीजिए. अगेन तो हम फिर इसको भरेंगे. Right, sir. फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है जी? Right, sir. Right, sir. Thank you very much. Any question? Okay. So there was a prefer visual presentation. So in most of these days, what we have also observed that students are more into the visual presentation part rather than onto the visual part, that is whiteboard and blackboard teaching. So this is more effective way of learning. That is the prefer visual presentation. So that's why we are learning this very topic, because if a new teacher comes, he doesn't know about these things. So we are making them aware. We are orienting them. ये स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है, स्टूडेंट ऐसा भी होता है. हम में से भी कई स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे. हमें अपने फ्रेंड्स के बारे में पता है, अपने क्लासमेट्स के बारे में भी पता है. हम अपनी क्लास को विजुअलाइज करते हैं. So that's why we are changing or adopting various ways and means and changing our strategies so that the teaching takes place effectively. That is when only if the learning takes place. तो मेरा एक ही मतलब जिसको स्लोगन बोलते हैं कि if learning takes place, we say that teaching is there. If no learning takes place, there is no teaching. We may adopt so many ways and means. It is of no use. Yes, sir. Yes. Thank you very much once again.